Good evening to all of you. This audible, visible to all? Am I audible? All clear? ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? Just one second. Okay, all clear, audible, visible. All right. Give me just 1 second. So, how are you? बहुत दिन परे. After a long period of time, again we are having this economic session. How are you all? केमती अछंती समस्ते? How are you all? केमती अछंती? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ठीक अछि. सो आज क्लास रे आमे डिस्कशन करबा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट या पूर्व अनेक इंपोर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स रा आमे डिस्कस करि सारि छै. बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मु डिस्कस करि सारि छै विथ रेस्पेक्ट टू ओसीएस एग्जामिनेशन. ओसीएस प्रीलिम्स एग्जाम एंगल ले बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस होई छै एवं आजि जदि कहबी आउ किछि इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करबा. आजिर क्लास रे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस करबी. देन आसंता काली रो क्लास रे मे बी एक्सटर्नल ट्रेड ऊपर किछि इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करबा एवं नेक्स्ट क्लास रे ह्यूमन डेवलपमेंट नेशनल इनकम भली आउ किछि इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करबी. नाउ दिस इज द शेड्यूल फॉर दिस वीक. एई वीक रो शेड्यूल आज हम देखिया मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ए पार्ट ऊपर हम आज डिस्कशन करबा. तो हमें by the end of this class you will come to know what is money market, what is capital market, scheduled commercial bank कौन, non scheduled commercial bank कौन, share कौन, bond कौन, है ना, डिवेंचर कौन, ये सब important point ऊपर by the end of this class you will come to know. So ताले मते कोन what is a financial system? Financial system कहले कौन बुझुची? ना समस्त जॉइन करी गले, समस्त जॉइन करी गले बहुत बढ़िया बढ़िया गुड. सो बहुत दिन परे आमे क्लास करछे अगेन एंड आई होप समस्त भलो अछंती एवं समस्तकर प्रिपरेशन मध्यम भलो चलिछ. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ मार्केट, व्हाट इज अ सिस्टम. फाइनेंशियल सिस्टम कहले आमे कोन बुझे? सिस्टम कहा को कहूचे? सिस्टम हमें गवर्नमेंट पाई ये वर्ड को यूज करते मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर गवर्नमेंट. ये स्मृति बहुत बढ़िया. ऑलराइट. तल देखंदु गोटे छोटो एग्जांपल दोछि. इकोनॉमी रे दी प्रकार रो लोक थांती. इकोनॉमी रे दी प्रकार रो इंडिविजुअल थांती. कोन कोन ना गोटे मनी मनी सरप्लस पीपल आ गोटे लेकिन ना मनी डेफिसिट पीपल. कोन कहली मनी सरप्लस एंड मनी डेफिसिट. मनी सरप्लस मींस एमानक पाखरे एक्स्ट्रा मनी अछि. What they want to park their money and get some income, and to get some income किछि income मध्य माने पाइबे.
ठीक अछि टू इन्वेस्ट देयर मनी एंड टू गेट सम इनकम दिस इज देयर ऑब्जेक्टिव नाउ डेफिसिट एमाने कोन चाहती ना दे विल टेक लोन एमान पाखरे कम मनी अछि दे विल टेक लोन एवं या पई दे विल पे इंटरेस्ट माने इंटरेस्ट पेमेंट करिवे बुझ पाले ना क्वेश्चन इज मनी सरप्लस लोक कि जमींदार ही पारे मनी लेंडर ही पारे जोटा पूर्वर थिला मनी डेफिसिट जो माने एग्रीकल्चरल लेबरर थिले पूर्वर तो एग्रीकल्चरल लेबरर कोन करथिला एग्रीकल्चरल लेबरर कोन करथिला ना मनी लेंडर ठू टंका नउथिला एवं ताको ठीक समय रे रिटर्न करि परनथला सुझी परनथला जहा पई एटी डिस्प्यूट क्रिएट होतला तो से समय थिला मु देली 2 टंका तू नेलु 2 टंका टोटल 4 टंका ऊपर सुध लागुथला तो से सुध भितरे फसी जाउथला मनीटा को टोटल रिकवरी माने रिटर्न करि परनथला तो जहा पई तार बंधा पड़थला 6 मान 8 मान भले अनेक स्टोरी समस्त पढिथि नै कि तो ए सरप्लस एवं डेफिसिट पीपल एंको कंट्रोल करिया पई मझिरे गोटे ऑर्गेनाइजेशन आसिला जहार नाम छि कोन ना बैंक now either it is a government organization or it is private organization but regulated by RBI or Ministry of Finance now बैंक रो काम कोन ना जो माने मनी सरप्लस पीपल जहां पाखर अधिक टंका अछि दे विल पार्क देयर मनी हियर दे विल डिपॉजिट देयर मनी विथ द बैंक एवं ये डिपॉजिट हैला परे यदि हम देखिबा एमाने बैंक कोन करबो ना लोन दबो कहा को ना जो माने मनी डेफिसिट पीपल जो माने मनी डेफिसिट जो माने घर कम टंका अछि बुझिला ताले एटी बैंक रो क्वेश्चन आसे कोन क्वेश्चन आसीबो कि बैंक रो बेसिक फंक्शन कोन व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ बैंक बैंक रो बेसिक फंक्शन किए ना डिपॉजिट करबा एवं लोन दवा डिपॉजिट करबा एवं लोन दवा होची बैंक रो बेसिक फंक्शन बुझ पाले मो कथा डिपॉजिट एक्सेप्ट करबा एवं लोन दवा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ बैंक तो ये गला बैंक रो कथा ताले फाइनेंशियल सिस्टम रे कोन व्हाट इज द सिस्टम रे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट अछि एटी डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस थाए फाइनेंशियल सर्विस रे कोन आसुची ना जेमति कि मु कहिबी फाइनेंशियल सर्विस रे वी कैन टॉक अबाउट डिपॉजिट्स you can talk about deposit you got a financial service loan is a financial service then financial institutions involved ye financial institutions kon involved na bank NBFC emanele financial institution financial market may be money market may be capital market may be money market or capital market या पहले financial market no financial instruments कोन ना मु कहि शेयर हे पारे बॉन्ड हे पारे बा डिबेंचर हे पारे हैला ये सब बोले कोन दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सो ये सब गुडा को मिसिला परे फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये सब गुडी को मिसिला परे हमको कोन मिले ना ये सब मिसिला परे हमको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोन मिले ये सब ना इंडियन ये सब को मिसेला परे हम कोन कहउची ना इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बुझ पाले मो कथा व्हाट इज द सिस्टम व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम क्लियर ना फाइनेंशियल सिस्टम पर हमर टॉपिक ऑफ डिस्कशन अछि ओनली मार्केट एठी हम देखिबा कोन ना मार्केट एठी मार्केट केते प्रकार ना ये मार्केट होची दुई प्रकार गोटे को हला कोन ना मनी मार्केट आ गोटे को हला कोन ना कैपिटल मार्केट कोन मनी मार्केट एवं कैपिटल मार्केट मनी मार्केट कोन और कैपिटल मार्केट कोन डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड इट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट मनी मार्केट टा कोन ना मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट कैपिटल मार्केट टा कोन ना कैपिटल मार्केट टा होची गोटे लॉन्ग टर्म मार्केट व्हाट इज दिस ना दिस इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मार्केट भीतर डिफरेंस कोन एवं यार आवश्यकता कोन लेट्स से मैं गोटे प्लांट एस्टैब्लिश करिया को चाहू गोटे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टैब्लिश करिया को चाहू ताले कोन दरकार तुमको ना किछि प्लांट दरकार मशीन्स दरकार कोन करे किछि मशीन्स दरकार हैला जोड़ा को फिक्स्ड ना ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट बट ह्यूज इन्वेस्टमेंट दिस इज वन टाइम एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट दरकार मतलब ब्रेड फैक्ट्री कल
सो ब्रेड फैक्ट्री गोटे प्लांट करियो प्लांट रे केते टंका बहुत अधिक टंका दरकार ना वन टाइम सब बड़े बारंबार यू डोंट नीड टू पे मनी फॉर दिस ना एटा जो लॉन्ग टर्म रे हैला एवं वन टाइम इन्वेस्टमेंट हैला एटा कोड आसे इट बिलोंग्स टू कैपिटल मार्केट ये टंका को कैटर करि पारिबो ना या व्यतीत जदि हम देखिबा मार्केट रे अब आउ किछि मार्केट अछन जोठी तुमर डे टू डे खर्च डे टू डे एक्सपेंडिचर दरकार जेमति कि मु कहबी रॉ मटेरियल पई टंका दरकार जेमति मु कहबी ट्रांसपोर्टेशन पई टंका दरकार जेमति कहबी लेबर पेमेंट पई पैसा दरकार ये सब दरकार कि दरकार नहीं ये सब पेमेंट दरकार ये सब शॉर्ट टर्म एवं या किए दब ना इट विल बी गिवन बाय दी मनी मार्केट okay so day to day expenditures they are given by money market এবং long term expenditures they are given by the which market given by the capital market now is this clear what is money market and what is capital market and what are the functions of bank and what are the functions of bank everyone clear no doubt ये बहुत इंपोर्टेंट और ये सेक्शन क्वेश्चन आसी देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दी भाग में मोस्टली डिवाइड करा जाए कौन ना गोटे है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एवं आउ गोटे कौन ना नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कहली बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एवं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के ना दोज हु इन्वॉल्व इन बैंक नॉन बैंकिंग कौन आसीबो एटा पढिबा सो बैंक को दुई भाग में डिवाइड करा जाए गोटे शेड्यूल्ड बैंक आ गोटे नॉन शेड्यूल्ड बैंक बा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किए तो प्रत्येक जगह पढ़े बहुत सहज लिखा है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किए ना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक व्हिच आर इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई कोडी ना व्हिच आर इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोडी व्हिच आर इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कहा जाए and which are not included here they are known as the non scheduled banks एमान को non scheduled bank बोली कहन now let's understand what is the difference between a scheduled bank and a non scheduled bank now मते कोन scheduled और non scheduled bank यार ना पूर्वरु समस्त सुनिचंती ना नहीं ना आज फर्स्ट टाइम सुनिचन scheduled bank और non scheduled bank यार ना पूर्वरु सुनिचंती ना आज फर्स्ट टाइम समस्त शुणिथिबे आई एक्सपेक्ट कौन शेड्यूल्ड बैंक एवं नॉन शेड्यूल्ड बैंक यार ना समस्त शुणिथिबे सो ये कहूँ कि बाय डेफिनेशन द बैंक व्हिच इज लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल दे आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक ताले व्हाट इज द डिफरेंस कौन सेकंड शेड्यूल जे अछि जो बैंक ता मेंशन है सेकंड शेड्यूल ले हमें ताको कहूचे which is mentioned in the second schedule हम तो कहूचे scheduled commercial bank and which is not scheduled in the second schedule तक हम कहूचे mention है schedule mention ना non scheduled bank now what is the difference होची कि in case of emergency in case of emergency scheduled bank से माने RBI पाखरो लोन नहीं पारिबे now non scheduled bank कौन नहीं पारिबे non scheduled bank भी emergency नहीं पारिबे now scheduled bank पाखरे आउट ऑप्शन अछि जनरल टाइम रे मध्ये अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी जनरल टाइम पीरियड रे मन करता रेपो मेंटेन करिया पई रिवर्स रेपो मेंटेन करिया पई सॉरी सीआरआर एसएलआर मेंटेन करिया पई ये बैंक माने शेड्यूल बैंक दे कैन टेक लोन फ्रॉम दी आरबीआई ताले नॉन शेड्यूल बैंक नो नॉन शेड्यूल बैंक दे कैन नॉट टेक लोन फ्रॉम आरबीआई इन नॉर्मल टाइम पीरियड कोन नॉर्मल टाइम पीरियड रे माने नहीं परिबे ताले को समय नेबे ओनली इन इमरजेंसी इट इज अलाउड केवल इमरजेंसी अलाउड से माने इमरजेंसी नहीं पारिबे बुझी परले मो कथा ताले शेड्यूल्ड एवं नॉन शेड्यूल्ड भीतर डिफरेंस कोन हला ना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक नॉर्मल टाइम रे लोन नहीं पारिबो आरबीआई पाखर नॉन शेड्यूल्ड बैंक नॉर्मल टाइम रे लोन नहीं पारिबे नाही नाउ इमरजेंसी टाइम पीरियड रे बोथ शेड्यूल्ड बैंक भी लोन नहीं पारिबे एवं नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी लोन नहीं पारिबे नाउ दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन ई एरिया को क्लासिफाई करा बुझिला अभिजित एसो अनुवाग इकोनॉमिक्स क्लास आसीनी आसीबो अनुवाग इकोनॉमिक्स क्लास विल कम सून
एसो तो आसनी किसी नोटिफिकेशन, सो डोंट वरी बिफोर नोटिफिकेशन आसवे आगु सिलेबस सर जाइथिबो तुम्हारा टाइम रे, डोंट वरी अबाउट ना मते कोन शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक कोन बुझे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कोन बुझले कि नहीं कोन कहली मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट बुझेला कि नहीं शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बुझेला कि नहीं शेड्यूल नॉन शेड्यूल ऊपर बहुत जन को डाउट आसे एवं एथुर क्वेश्चन मध्ये आसे कहली गोटे सेकंड क्लियर कौन लिखले होतले ओपीएससी रो मेंस पाई गाइड करिवे इकोनॉमिक्स डोंट वरी सो मोर देखिए मेंस पूर्वरु मध्ये क्लास आसीची कार कोन कहली मेंस पूर्वरु इकोनॉमिक्स रो क्लास आसीची मेंस प्रिलिम्स पूर्वरु इकोनॉमिक्स रो क्लास आसीची समस्त देख परथिबे एमसीक्यू सेशन आसीची ना एटी ई 9 और 10 टा जो सेशन हमर चलीची सेथरे हम अनेक गुडे इंपोर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी पढ़ी सारले देयर आर मेनी रेगुलर स्टूडेंट्स मझिरे किस दिन तले 8 10 15 दिन ब्रेक हो जाइतिला जुलाई मासरे क्लास हे पानी बट जून रे हितला अनेक गुडे सेशन मो ऑलरेडी जून मासरे नैची देयर आर मेनी स्टूडेंट्स बहुत स्टूडेंट्स थे जो माने जो माने कंटीन्यूअसली क्लास करूथिले देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो माने कंटीन्यूअसली क्लास करूथिले कोन हला सो प्रिलिम्स पाई मेंस पाई डोंट वरी व्यस्त हवार कोनोसी आवश्यकता नाही मु पूरा पढेबी सब टॉपिक पढा जो सब टॉपिक आमे एटी कवर करिवा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिवा आंसर राइटिंग पूर्व आंसर राइटिंग करिवा देन बिफोर इंटरव्यू पूर्व कंप्लीट इंटरव्यू गाइडेंस रहिबो फुल कोर्स जहाँ जहाँ दरकार ओसीएस परीक्षा पाई ओसीएस पाई जहाँ जहाँ पढ़िवा दरकार सब गुडा कवर हो तो किसी व्यस्त हवार आवश्यकता नहीं इकोनॉमिक्स पाई मेन पेपर रे यस रोनालिन डेफिनेटली इकोनॉमिक्स पाई डायग्राम दरकार व्हेनेवर रिक्वायर्ड यू हैव टू यूज बट डायग्राम अपेक्षा व्हाट इज इंपोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स इज इंपोर्टेंट डाटा इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन बहुत इंपोर्टेंट दरकार सो कोड डाटा आनिबे इकोनॉमिक्स जेतो आंसर लिखुचंदी डाटा कोड आनिबे को डाटा को इंपोर्टेंट डाटा बोली कहा जाउची इकोनॉमिक्स सबुठ इंपोर्टेंट हला बजेट एवं इकोनॉमिक सर्वे डाटा लिखिक रखन बजेट डाटा इकोनॉमिक सर्वे डाटा कौन कहले बजेट डाटा इंपोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे डाटा इज इंपोर्टेंट आउ को डाटा इंपोर्टेंट हम भाई या व्यतीत मु कभी जदि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अछन लाइक डब्ल्यूटीओ आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एमानक डाटा मध्ये हम भाई इंपोर्टेंट हो कि नहीं इंडिया जदि किसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डाटा नाबार्ड रो डाटा ये सब भी हम भाई इंपोर्टेंट बुझला ये सब इंपोर्टेंट डाटा ये डाटा को निजे रखु पाखे आउ गोटे कही गोटे खाता करने जो खाता रे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन रखिए इंपोर्टेंट गोटे कही इंपोर्टेंट डाटा खाता करेंगे कोटेशन गोटे खाता लिखिए इंपोर्टेंट कोटेशंस कीवर्ड्स लिखिक रखिए देन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिखिक रखिए
ये सब वाला मेंस ପାଇଁ बहुत दरकार एतिक इनफॉरमेशन जहाँ पाकर अच्छी पर्सन इज 50% प्रिपेयर्ड आपण परीक्षा ପାଇଁ 50% प्रिपेयर्ड जदि एतिक इनफॉरमेशन रखछन पाकर सो इट इज इंपोर्टेंट टू गेट all this informations in a very comprehensive manner with you. देखो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल ताल गोटे नॉन शेड्यूल बैंक रे एग्जांपल कोन सबु बड़ एग्जांपल है जम्मू कश्मीर बैंक ओनली नॉन शेड्यूल बैंक रो एग्जांपल के द बेस्ट एग्जांपल इज जम्मू कश्मीर बैंक ताले हम देखिए को बैंक आरबीआई एक्ट 1934 रो सेकंड शेड्यूल रे आसंती स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या आसीबे कहनी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आसीबे एसबीआई एंड एसोसिएट्स तो मर्ज होइछ नेशनलाइज्ड बैंक जो बैंक गुडा कर नेशनलाइज हो जाइछ नेशनलाइज्ड बैंक्स आसीबे आउ के आसीबे ना प्राइवेट सेक्टर बैंक देखो दीज आर द लिस्ट ऑफ एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक किछि प्राइवेट सेक्टर बैंक रो नाम मते कहिले किसी प्राइवेट बैंक रो ना कहिले मते पीडब्ल्यू आप रे मेंस क्वेश्चन यस करि परिबो ना लेकिन किछ असुविधा नै बहुत क्वेश्चन अछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो पीडब्ल्यू आप करो ना प्राइवेट सेक्टर बैंक रो ना समस्त जानथिबे आपको न्यू और ओल्ड रे डिफाइन करा जाय बा डिवाइड करा जाय मोस्टली इंपोर्टेंट हम पे आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक दीटा बैंक अथन जो मानो कह जाय टू बिग टू फॉल टू बिग टू फॉल किए गोटेला एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गोटेला आईसीआईसीआई हला ये दिटा हला टू बिग टू फॉल ता माने ये दिटा केबे फॉल करिवेनी फॉल बा फेल सॉरी टू बिग टू फेल बा फॉल जा को ये दिटा केबे फेल करिवेनी काहे कि ना एते बड़ ए माने बा एमान पाखरे एते डिपॉजिट अछि सो दे आर द टू इंपोर्टेंट पिलर ऑफ द इकोनॉमी दे आर टू इंपोर्टेंट पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी. Now the next is foreign banks. Now see these are the list of foreign banks. Abu Dhabi Commercial Bank, American Express Banking Corporation, Arab Bangladesh Bank. So ताले second schedule मोटा मोटी भाव में देखिले what is the summary of second schedule? को बैंक को हमें scheduled commercial bank बोली कहूचे. Most important state cooperative banks. Then is the urban cooperative banks. Then SBI and associates. Then nationalized banks, private sector banks, foreign bank and Grameen bank. Hello? Private bank, foreign bank and Grameen banks. So this is the exhaustive list of second schedule. Chalo, now which important point pass here. Now let's talk about origin of modern banking industry in India. First Bank of India ke? First Bank of India is Bank of Hindustan. Bank of Hindustan केबे आसला ना it came in 1770 केबे ना 1770 रे आस नेक्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक तो तीनटा इंपोर्टेंट प्रेसिडेंसी दिला प्रेसिडेंसी कहा को जाय जोटे ब्रिटिशर मानकर फर्स्ट जो माने ब्रिटिशर माने आस्थिले एवं आसला पर सिटी कॉलोनी क्रिएट करथिले तुमरो मुंबई कोलकाता एवं बॉम्बे बॉम्बे कोलकाता और मद्रास सो मद्रास रे 1640 रे बॉम्बे रे 1687 रे बेंगल रे 1690 रे सो तीनटा प्रेसिडेंसी बैंक क्रिएट हला बैंक ऑफ कोलकाता बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास 2nd June 1806 बैंक ऑफ कोलकाता एस्टैब्लिश्ड इन 1806 1809 रे याको ना चेंज करी करागला बैंक ऑफ बंगाल 15 April 1840 Bank of Bombay established. 1st July 1843 Bank of Madras it was established. Then ये तीनटा बैंक मिसी की 1921 ने क्रिएट हला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया
तीनटा प्रेसिडेंसी बैंक को मिसेला पर कौन क्रिएट है ना इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया इट वाज क्रिएटेड केबे इट वाज क्रिएटेड इन 1921 1921 रे ये क्रिएट है इंपेरियल बैंक now 1955 रे इंपेरियल बैंक को नेशनलाइज करा गला एंड इट वाज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन रीनेम करा इट वाज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया so state bank of india this is the oldest bank of india among all other banks this is the oldest bank of india among all other banks the next is first bank owned and managed by indians के first bank owned managed by indians it is the Oath commercial bank Oath commercial bank 1881 रे हला फैजाबाद रे हला and it was failed in 1958 so first bank purely managed by indian it was punjab national bank purely managed ke punjab national bank is the first bank which is purely managed by indians केबे हला ये ना 1895 रे आसे so pnb एबे exist करछ कि नहीं does pnb exist now whether pnb exists now or not yes it exists okay the next is first indian bank which was wholly owned and managed by indians okay which was owned and managed by indians it was the central bank of india you call it is central bank of india now एटी क्वेश्चन कौन आसे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूँ क्वेश्चन आसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इट इज कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक यार फाउंडर थे कि ना सोराब जी फंक्शन वाला एंड फर्स्ट चेयरमैन के थे सर फिरोज शाह मेहता एमान को ना समस्त सुनिथिबे हिस्ट्री देयर एमिनेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री एंड एवरीवन इज अवेयर अबाउट देम फर्स्ट बैंक टू ओपन ब्रांच इन फॉरेन सॉइल कि आउटसाइड इंडिया रे फर्स्ट लंडन रे आसला 1946 रे इंडियन बैंक को बैंक ना इंडियन बैंक बुझला नेक्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 रे नेशनलाइजेशन हला व्हाई नेशनलाइजेशन नेशनलाइजेशन पछरे कारण कोन थिला ना इस समय जदि हम देखिबा इंडो चाइना वार 1962 इंडो पाकिस्तान वार 1965 इंडियन इकोनॉमी पर प्रेशर बिकॉज ऑफ द ड्रॉट कंटीन्यूअसली ड्रॉट हैला सो इंडियन इकोनॉमी पर प्रेशर फूड शॉर्टेज हमको इस समय देखियो मिलला कोन कहलिया फूड शॉर्टेज इस समय देखियो मिलला सो 3 ईयर प्लान हॉलिडे 1966 रो 1969 पर्यंत असला कोन 3 ईयर प्लान हॉलिडे यही सब कारण मान 1960-70s इट वाज अ ट्रबल डिकेड फॉर इंडिया सो बैंक नेशनलाइजेशन करिया पछरे मुख्य कारण कोन थिला ना इंडिया रो जीडीपी ग्रोथ होई परिबो एवं बैंक रहउतवा प्रॉफिट को सोशल वेलफेयर रे यूज करा जाई परिबो बैंक ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर मानकर मोनोपोली अछि ये मोनोपोली को कंट्रोल करा जाई परिबो यू कैन कंट्रोल दी मोनोपोली ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग टू रूरल एरिया को बैंक को एक्सपैंड करि परिबो है ना you can reduce regional imbalance to curb the urban rural divide कौन कहली urban rural divide को reduce करि परिबे बैंक माने साधारणतः कोड थिले mostly banks were found in urban area banks they were found in urban area हैला now priority sector lending रे जाई परिबे in india the agriculture sector allied agriculture sector एमान को इंपोर्टेंस दिया जाई परियो प्रायोरिटी सेक्टर रे आसु के प्रायोरिटी सेक्टर एजुकेशन मुगे रिन्यूएबल एनर्जी इंपोर्टेंट एगुडा हाउसिंग
एमएसएमई सेक्टर है ये सब आसुचन क्या भीतर दे कम अंडर द पीएसएल प्राइवेट सेक्टर दे कम अंडर पीएसएल और जहाँ हम कहूँ प्राइवेट सेक्टर में नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स कहार सेविंग्स जो पब्लिक सेविंग्स अच्छी से पब्लिक सेविंग को यूटिलाइज करा जाय परिबो जो मानकर टंका अच्छी तांका टंकाटा को नेकी यूज करा जाय परिबो कोडी कोडिया को यूटिलाइज करा जाय परिबो या को यूटिलाइज करा जाय परिबो पब्लिक पय मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग को पब्लिक फंड को पब्लिक पय यूज करा जाय परिबो सुधीर को देखाई दिला ठीक अछि पीडब्ल्यू इनॉग्रेशन ठीक अछि तब देखिए बैंक नेशनलाइजेशन रो इम्पैक्ट कौन पड़ेगा इम्पैक्ट पड़ेगा कि इंडिया रे ब्रांच गुडा का एक्सपैंड करी गले कितना टू 800% एक्सपैंड हो गला 11,000% इंक्रीज हो गला कौन डिपॉजिट एंड एडवांस बुझे सो बैंकिंग गवर्नमेंट ओनरशिप अंडर रे बैंक मानकर डेवलपमेंट हला सस्टेनेबिलिटी बढ़िला बैंक केवल मेट्रोपॉलिटन सिटी नुहे रूरल इंडिया रे मध्य बैंक माने एस्टैब्लिश होबा लागले कौन लिख जाओ ऑफलाइन बैच ऑफलाइन सेंटर बुझ पारियो ऑफलाइन ऊपर मोर एते आईडिया नहीं बट ऑफलाइन सेंटर को डायरेक्टली कॉल करिबा विजिट करि बुझ पारियो नाउ एनी क्वेश्चन ऑन ओसीएस ओडिशा सिविल सर्विस उतार कहि दे नेक्स्ट सेमती आरबीआई मोर थला केबे ना 2016 ने आरबीआई मोर चलो नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक किए पब्लिक सेक्टर बैंक जोठी गवर्नमेंट शेयर इज मोर देन 51% गवर्नमेंट शेयर मोर देन 51% हेले हमें तो कहते पब्लिक सेक्टर बैंक सो 2020 मर्जर पर नंबर ऑफ बैंक्स रिड्यूस फ्रॉम 27 टू 12 केते गला 27 टू 12 नाउ these आर द बैंक्स व्हिच नाउ एक्जिस्ट इंडिया ए बैंक माने वर्तमान एक्जिस्ट करता बुझ पाले जदि किसी डाउट अछि भीतर को एनी डाउट ऑन दिस चला कितना क्वेश्चन देखिए फंक्शंस ऑफ आरबीआई आरबीआई को अपेक्स बैंक आरबीआई को बैंकर्स बैंक बोली कहा जाए फर्स्ट देखिए आमे मॉनिटरी फंक्शन बैंक ऑफ इश्यू माने कौन ना बैंक नोट इश्यू करिवे ये बैंक नोट इश्यू करिवे बट कॉइन किए इश्यू करंती कॉइन इज इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया it is issued by Ministry of Finance, Government of India, but circulated by important circulated by RBI. Circulated by RBI. Then Bankers Bank. Bankers Bank माने बैंक मानकर बैंक होची RBI. Now government रो बैंक होची RBI. For government the bank is also RBI. Foreign exchange रो custodian and credit control. Credit control means amount of credit, amount of money केते रहियो मार्केट रे decides amount of money. RBI decides quantity लिखुची quantity of money supply in market. कौन कहले क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इन द मार्केट
Now general function is supervisory function and promotional function. सुपरवाइज करियो बैंकिंग सिस्टम को एंड प्रमोशनल प्रमोट करियो बैंकिंग सिस्टम बुझीला मो कथा ना डाउट ना केतरा क्वेश्चन करियो आमे छोट छोट क्वेश्चन दि चर्चा करेबी which of the following is major indication of state of the economy of a country rate of GDP growth, rate of inflation, number of banks in a country, none of this कौन हो क्विक समस्त कहे जल्दी जल्दी rate of GDP growth ठीक अछि वेरी गुड rate of GDP growth नेशनल इनकम टा पढ़ेबी काली पढ़ेले करिवो ता तळ क्वेश्चन टा करो व्हिच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू जीडीपी व्हिच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू जीडीपी कौन हम व्हिच सेक्टर बहुत सिंपल क्वेश्चन प्राइमरी सेक्टर किए आसला प्राइमरी सेक्टर इज अबाउट एग्रीकल्चर एंड allied agriculture this is agriculture and allied agriculture secondary sector is about manufacturing or I can say industry tertiary sector this is the service sector this is service sector now public sector किछि आसुनी चारटा सेक्टर so सर्विस सेक्टर टा बढ़ुछि कंट्रीब्यूशन अच्छा यदि क्वेश्चन चेंज हो जाए क्वेश्चन हो कि व्हिच सेक्टर प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट व्हिच सेक्टर जनरेट्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कौन हो व्हिच सेक्टर जनरेट्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कौन हो now maximum employment is generated by primary sector so primary sector रे हमको देखिया मिले disguised unemployment जो थरे marginal productivity zero जो थरे marginal productivity is zero है ना next who estimated national income in India for first time who estimated national income in India for first time
दादा भाई नारोजी करेक्ट. Laissez faire is associated with very important question. Laissez faire is associated with laissez faire means non interference of state. एटा पढाइथिली बा भूली जाउछ सब. This is non interference of state. हैला तो ये कौन कहना स्टेट इंटरफेयर करबनी. ये को स्टेट ना, दिस इज इंडस्ट्रियल स्टेट. प्राइवेट सेक्टर एक्जिस्ट, so it is which state? This is industrial state. More appropriate measure of country's economic growth is most appropriate measure of country's economic growth is this is per capita real income. Next, in free economy, inequality in income is due to per capita. बुझिन एटा रोनालिन ठीक अछि, बुझे दे व्यस्त बनी अच्छी तो जीडीपी क्लास आसीओ पुणी थ्रू कहि डिस्कस करबी. ना लास्ट क्वेश्चन एटा, inequality of income is due to कौन पाई ना difference in, sorry, private property and inheritance, because of private property and inheritance. ठीक अछि, हो ठीक अछि, एति के थाउ अछि आ जा अछि देखिबा हमें पुणी नेक्स्ट क्लास. बहुत क्वेश्चन अच्छे और बहुत टॉपिक भी अच्छी डिस्कस करिया पे, विल डिस्कस इन अपकमिंग सेशंस. सो आज हम डिस्कस कले करना फाइनेंशियल मार्केट हैला. तो एटी देखला हमें मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच. आउ जा हम देखिबा नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, गुड नाइट. काली पुणी देखिबा, कालीर क्लास रे आउ कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करिबा.